to manage a conflict and to resolve a conflict. Conflict is a difference of opinion, thought, feeling. First, win-win scenario. Second, win-lose scenario. Third, lose-win scenario. Fourth, lose-lose scenario. My channel objective is to put everything beyond text. Hello everyone, welcome back. I'm back with a new topic and today's topic is conflict management. Rather, it is a conflict management versus conflict resolution. क्या difference है दोनों में? To manage a conflict and to resolve a conflict. These two propositions are altogether different, but in a common man's terminology, both are equal. तो उसी को हम one by one समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर होता है किसी विवाद को सुलझाने में और किसी विवाद को मैनेज करने में या फॉर द टाइम बीइंग सेटल करने में. और अगर मैं बात करूं कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कॉर्पोरेट से रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है, एक वर्किंग कल्चर से रिलेटेड नहीं है. विवाद, कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन का हिस्सा है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, अगर इस टेक्निक के बारे में पता हो तो हमारा काम आसान हो जाता है. और यही इस वीडियो का मुद्दा है. टू पुट दिस इन अ लेमन्स टर्मिनोलॉजी, एक आम आदमी की भाषा में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को समझने का एक प्रयास. तो आइए समझते हैं इसके कुछ टेक्निक्स हैं. फ्यू मेथड्स आर देयर. इफ वी अप्लाई इट इफेक्टिवली ऑन टाइम, वी कैन गेट quick resolution or a quick management of any conflict. Before we talk about how to manage or resolve any conflict, we have to understand what is a conflict first of all. विवाद क्या है? अगर मैं विवाद की बात करूं तो ये हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है. Indispensable proposition of a human life. We cannot avoid it. कहते हैं ना, जहां भी दो लोग एक साथ काम करते हैं, there is a possibility of conflict. But we have to understand how to resolve, if not resolve, at least how to manage it. Conflict is a difference of opinion, thought, feeling between two individuals, two groups, two teams, two parties. Make it very simple. As my channel objective is to put everything beyond text. तो एक आम आदमी की भाषा में विवाद का मतलब होता है भावनाओं का मतभेद या विचारों का मतभेद. ये एक इंडिविजुअल के लेवल पे हो सकता है, एक ग्रुप के लेवल पे हो सकता है, एक टीम के लेवल पे हो सकता है, एक पार्टी के लेवल पे हो सकता है और एक सोसाइटी के लेवल पे हो सकता है. सो इट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल, माइट एंड अप एट द ग्रुप. सो नाउ सिंस वी हैव डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट, विवाद को हमने परिभाषित कर लिया, अब आइए समझते हैं इसको मैनेज कैसे करते हैं. The first technique to manage conflict is to avoid. We have option to avoid it. अब यहाँ पे बात हो सकती है, अगर मैं avoid करूं तो हो सकता है मैं weak कहलाऊं. I may not be considered as strong-headed, so why should I avoid? But we need to understand here, avoiding doesn't mean permanently avoiding something. For the time being, उस given point of time पे अगर आप उसको avoid करें तो थोड़ी देर के लिए आप उसको manage कर सकते हैं. So avoiding is one of the techniques. If you exercise it, you can manage it for a while. Second, accommodating. अगर हम accommodate करने की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी के point को consider करने की बात हो रही है, उसके लिए एक खास जगह बनाने की बात हो रही है, so that one should feel valued. वो अपने आप को valued feel करे, that you have given some space for his opinion or a thought. So accommodation is required to manage conflict. So this is one of the techniques what you can use to manage conflict. Third point, dominating. This is also one of the ways to manage conflict, but there is a condition. Dominating can be exercised when you are at a senior level, but dominating in a peer group और अगर आप अपने दोस्त के साथ, colleagues के साथ dominating approach अपनाते हैं तो ये backfire करेगा. Here dominating means what? It's my way or a highway. There is no point exercising dominating approach when you are at the equal level, because here your dominance does not matter for your colleague or a friend. But if you are in the position to use your authority as a senior or superior, you can use it once in a while. But mind it, this will only manage for the time being. It will not settle the problem once for all. And the fourth one, what you can use, compromising. Compromising का मतलब है एक स्टेप मैं चलता हूं, एक स्टेप तुम चलो, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज करूं. सो इट्स ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन. यहाँ पे मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी, कोई थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड होगा जो कि बोथ पार्टी को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अग्री कराए. बट अगेन इट इज अ ट्रिक and tips to manage conflict for a while. And last but not the least, fifth one,
collaborating means to partner with, सहभागी बने, join करे. There is a quotation in English, if you cannot beat them, join them. अगर आप किसी को हरा नहीं सकते और आपको लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है and they can give you tough fight, join them. उसका सहभागी बनो. अगर आप सहभागी बनते हो किसी कॉन्फ्लिक्ट में, अगर आप ज्वाइन करते हो किसी को, सो यू गिव वैल्यू टू देम एंड लेटर बाद में यू कैन गेट वैल्यू फ्रॉम देम ऑल्सो. सो इट्स अ विन विन सिनेरियो. नाउ आई वांट टू डिस्कस, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में 4 सिनेरियोज होते हैं. फर्स्ट, विन विन सिनेरियो. सेकेंड, विन लूज सिनेरियो. थर्ड, लूज विन सिनेरियो. फोर्थ, लूज लूज सिनेरियो. और अगर आप आइडियल कंडीशन की बात करें तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है विन विन सिनेरियो क्रिएट करना, जो कि कोलैबोरेटिंग अप्रोच होता है. यू हैव टू कोलैबोरेट टू क्रिएट विन विन सिनेरियो, जिसमें न आप हारते हो न सामने वाला हारता है. दोनों के अंदर एक सेंस ऑफ विक्ट्री होती है एंड दैट इज द आइडियल कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन, द परमानेंट सोल्यूशन. अगर आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है परमानेंटली, तो उसको मैनेज नहीं करना है, उसको रिजॉल्व करना है. और अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंटली रिजॉल्व करना हो तो इसके भी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं. So let's discuss these points as well one by one. So if I talk about resolution of any conflict so that it should not arise, इसकी स्थिति पैदा ना हो जहां कॉन्फ्लिक्ट या विवाद पैदा हो. So let's talk about these points one by one. So first of all, we have to be a good listener. If we talk about being good listener, 50% विवाद वहीं पे हल हो जाता है जहां पे हम एक पेशेंट हियरिंग देते हैं अपने काउंटर पार्ट को या पार्टनर को या अपने किसी भी फ्रेंड को, कुलीग्स को जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में होता है. अगर उसको एक पेशेंट हियरिंग देते हैं तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज एनी कॉन्फ्लिक्ट इज एन आउटकम ऑफ पुअर लिसनिंग और अ पुअर कम्युनिकेशन. सेकेंड पॉइंट, बी पेशेंट. बीइंग पेशेंट मीन्स व्हाट? धीरज रखो. व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वी रश थ्रू टू प्रूव आवर पॉइंट. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. दिस इज व्हाट द इनिशियल अप्रोच ऑफ all individual. It includes me also. But if you have patience, you can give space to other to first of all talk about his or her point. अपने साथी, अपने सहयोगी, अपनी कुलीग के साथ patient approach अपनाएं. So if you exercise patience, you can minimize conflict at the beginning. Next up, have a positive attitude. People always say that we behave through our attitude. So if you have a negative attitude, there is always possibility of conflict between you and your colleague, friend, relatives, anybody. So you have to change the approach first of all, and to change the approach you have to change your attitude, because all the action starts with the attitude. So we have to have a positive attitude towards society where we function. Next, never criticize anybody. If you criticize somebody, it gives you negative approach in your action, your body language. It will spread through very fast. It has got its own organic way to spread. So it does not follow any approach like vertical communication or horizontal communication. It spreads through any way, shape and form. So you have to be very careful towards any criticism. Never criticize anybody or about anything. You will automatically reduce the chances of conflict. So use the power of silence here. And last but not the least, to resolve conflict, ignore others. Do not seek your sympathizer where you can prove your points. Anyone who's there, do not talk about any conflict or a possible conflict, because if you ignore other, there is a less chance of a grapevine. It does not follow any shape and size. It spreads organically, be it horizontal, vertical, through organization or society. So we should avoid other and do not seek sympathizer. If you do so, you can resolve conflict at the early stage. So if you resolve it at the early stage, there is no need to manage it. So that is what the basic difference between conflict management and conflict resolution. And it is always good to resolve conflict at the early stage. But we know it, we are a human being, and where there are a group of people, there is bound to be conflict, because many mind, many find is always there. So eventually, if there is a conflict, let's manage it. So to conclude the topic of conflict, better to create win-win scenario rather lose-win or win-lose or lose-lose. Because अगर
कोई बैटल जिसमें दोनों विनर हो, दैट इज कॉल्ड आइडियल कंडीशन. वो एक आदर्श स्थिति होती है. एंड आई नो दैट आइडियलिज्म इज अ मिथ, बट देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग. I sincerely hope it has gone well with all of you. Until now, take care. Namaskar.